Okay, so today we are going to start with a new concept. What does it means by the object ID? There are a few more names for that. The object ID and the schema ID, object key prefix. These all are the names for this object ID. Now see, we have seen this in the Salesforce that if I go to any of the cloud, like if I go to Sales Cloud, I could see that it have these many of the tabs. If I go to the Service Cloud here also, you could see that we have different types of tabs over here. Then for the marketing cloud also there are different tabs, and we also know this how to customize these tabs. That's how to bring some of the tabs onto this tab bar, or how could we remove some of the tabs from this particular tab. So if at all I wanted to bring some more tabs over here, what I require to do is that just click on this plus button, and this will open this particular interface. Now here there's a button called as customize my tab. So you need to click that and probably this is the list of all tabs that we could bring either, or we could remove it from here, right? So let's do something. ऐसा करते हैं कि let me bring some more tabs on the tab. कुछ tabs को ला लेते हैं. For example, let me try to bring tab called as dashboard. So C के बाद में D आता है. So let me select that dashboard. We get added. Let me try to bring few more tabs, है ना. कुछ और tabs को भी मैं लेके आता हूँ. Like let me see first of all what are the different tabs we have in the Sales Cloud. These are the tabs what we have. So prioritization for campaigns. So let me try to bring the campaigns also. Let me put the campaign a little bit up so that this should be the sequence. And let me now save this. So see, we have bring few more tabs onto the tab bar. So this is we already have understood. Now see, tab is what this was the first thing actually what we have as in customization. What we have done, the very first thing what we learned is how to bring the tabs and how to remove the tabs from the tab bar, something called as tab bar customization. So this was the very first thing as a part of your Salesforce journey. But the first thing that you have learned was how to customize the tab bar. Now see, what exactly is a tab? If I ask you this as a question, we also have even discussed that, what is a tab? Let's come back to this definition. The tab is actually a kind of user interface which is used to, with which actually we could access any of the object. And moreover, we have seen that the relationship between the tab and the object is always one to one. Why? For one to one means for every one object there is one tab. Okay, there is no such tab. There is no two tabs for one object. Even for one tab doesn't belongs to two objects. That means the relationship is always one to one. So for every one object there is a tab. For every object there is one tab. For every object there is one tab, like this. Now this object name are actually in the singular form, but their tab names are always in the plural form. So tab names are always in the plural form. That is what we already have discussed. Now see, if I at all wanted to access the campaign object, so I must go to the campaigns tab and let me click over here. Let me just click over here on the campaigns tab. I am telling you to observe on this particular last digits, and let me show you that once again. So if this is my complete URL, what is forming whenever I actually click any of the tab. I want every one of you to just observe the last three after slash, like .com है तो .com के बाद में slash है, and after slash what is the number you could see over here. So for the campaign it's like 701. Oblique O is something. What does it means by oblique O? Oblique O is actually home. Oblique O stands for home. So if you click on the campaign, I could see that a number over here is 701. The number over here is the 701. Now if I click on the leads, this number changes to 00Q, right? If I click on the accounts, now this number changes to 001. If I click on the contacts, so the number changes to 003. For the opportunity, it's like 006. For the cases, it's 500. For the solution, solution is not over here, but for the solution is 501. For the documents is 015. For the reports is 00. For the dashboard is 01 set, like this. Now, you must have observed that whenever I go to any of the object, rather tab, okay, it's one and same thing. You go to the tab, you go to the
objects. That's really one and same. So if I wanted to go to the accounts, or rather if I'm onto the accounts, I could see that there is a number 001 represents the accounts. There's a number 007, 001, sorry, represents the account, right? So now we come to this conclusion that every object inside the Salesforce is having a 3-digit number. Every object inside the Salesforce is having a 3-digit number. For the campaign, this is 701. For the lead, this 303 digit number is 00Q, and that is alphanumeric. That number is actually alphanumeric. Alphanumeric means what? It have alphabets, it must have numbers also. ऐसा number जिसमें alphabets or numericals you see, that kind of number is called as alphanumeric. So what we are observing right now, every one of you, what we are observing right now is that for every object, for every tab, for every object, for every tab, there is a 3-digit number, and what this number stands for. So if I click on the account, I could see the number is 001 for the account. For the contacts is 003, for the opportunity is 006, like this. For the cases is 500, for the reports is 000. Everywhere, everywhere I could see the same thing. Now, so my final conclusion is that for every object, for every tab, there is a 3-digit number. There is a 3-digit number like 001, like 003 for the contacts, for 006 for the opportunity, 500 for cases, 00O for the reports, and similarly like here, 00Q for the leads, 701 for the campaign. Now, what this 3-digit number is called as? This 3-digit number is called as object ID. This 3-digit number is called as object ID. So every object inside the Salesforce, have a fixed 3-digit ID, and that ID is called as object ID. Sometimes it is also called as schema ID, object key prefix. These are few more names for this particular number, but what is the most popular number is the object ID. So did I actually require to remember all those objects ID? Certainly it is not possible. नहीं है. Why? ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि लॉग टेबल की सारी वैल्यूज याद करो, पहली बात ऐसा नहीं बोलता मैं कि याद नहीं की जा सकती, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिमेम्बरिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस मच ऑफ द एफर्ट? अगर आपको लॉग की सारी वैल्यूज याद करनी है तो ये फ्रॉम द हमने जब 10th पास किया था, प्रोबेबली दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने शायद लॉग यूज किया, उतना याद नहीं है मुझको कि कब यूज किया है, कि शायद पॉलिटेक्निक में किया है। बट हाँ, अगर आपको लॉग वैल्यूज याद करनी, आई मीन यू जस्ट वांटेड टू सी द लॉग वैल्यूज, तो आप लॉग टेबल खरीद के लाते हो दुकान से, और आप उसमें से जो भी आपको लॉग की वैल्यू है, फाइंड इट वैल्यू फ्रॉम उसमें से आप देख लेते हो। तो ऑब्जेक्ट आईडीज, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट देयर इज एन आईडी, ये तो हमें पता चल गया, बट देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स, ये भी तो एक फैक्ट है। इफ आई गो टू द सेटअप मेन्यू, here I could see, just expand this, customize, you could see that there are so many objects, there are so many objects. Does it really possible to कि हम इतनी सारी ऑब्जेक्ट आईडीज याद करेंगे? और यहाँ तो फिर भी कम है, If actually you wanted to see कि कितनी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, तो let's go to the developer console and go to the file menu, click on this open button. So in this particular dialog box here, you need to select the objects. And this here, this is the list of every object inside the Salesforce. See, these are the objects, standard object, custom object तो अभी हमने बनाई नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम custom objects बनाएंगे तो that custom objects are also going to be listed out. और फिर यहाँ पे वो भी ऑब्जेक्ट है स्टैंडर्ड कस्टम के अलावा जिसके लिए टैब नहीं है, ना? यहाँ पर आपकी वही ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होती हैं जिसका टैब्स है। मोर ओवर रिसेंटली यूज्ड, इस क्लाउड के लिए जो रिसेंटली यूज होती है, वो यहाँ पे सारी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं होती है। पहले तो वो जिसका टैब बना हुआ, जिसका टैब नहीं बना है, वो इस लिस्ट में नहीं मिलेगी आपको। बट हियर यू कुड सी एवरीथिंग। हियर ये जो लिस्ट है आपकी, दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, दिस लिस्ट, ये वाली लिस्ट की बात कर रहा हूँ, तो here you could see everything. आपको सारी लिस्ट मिल जाएगा, कंप्लीट लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द Salesforce, फिर वो कितनी भी हो, फिर वो चाहे स्टैंडर्ड हो, फिर वो चाहे कस्टम हो,
फिर वो चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो जिनका टैब बना हुआ है, वो चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो जिनका टैब नहीं बना हुआ है, ठीक है, सारी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। तो बहुत ज्यादा है, वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस, ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, and it's really not possible, or rather it's very time consuming to remember the object IDs of every object. But here I know this is entirely not possible to remember the IDs of every object. But हाँ, आपको पहली बात तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ 3 डिजिट नंबर दैट रिप्रेजेंट, जैसे कि आपके क्लास में आपके रोल नंबर्स हुआ करते थे, एंड रोल नंबर इज फिक्स फॉर एवरी चाइल्ड इनसाइड द क्लास। जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो आपको हॉल टिकट में जो आपका सीट नंबर वट एवर यू कॉल दैट, तो आपको एक रोल नंबर मिलता है, तो दैट इज फिक्स फॉर यू, है ना। सो इन द सेम वे इन द Salesforce फॉर एवरी ऑब्जेक्ट देयर इज अ फिक्स 3 डिजिट नंबर, ये कभी रिपीट नहीं होता है, दैट इज फिक्स फॉर दैट ऑब्जेक्ट। एक तो ये होता है कि कंसेप्चुअली हमको ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद मेरी एक सजेशन क्या है कि अगर आप जिस किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो 5 या 10 ऑब्जेक्ट्स, यूजुअली इतनी ऑब्जेक्ट्स लगती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स की आईडीज को याद कुछ ऑब्जेक्ट्स की आईडीज को याद कर लीजिए। व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट, जरूरी नहीं है सारी, व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट, सिर्फ सी फॉर एग्जांपल आई एम इनटू नाउ राइट नाउ आई एम इनटू द अकाउंट्स एंड आई वांटेड टू यूज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अब मुझे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूज करना है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन दिस टैब, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट फिलहाल यहाँ नहीं है। What is the first possibility? First possibility is to just click on this and then add it into the, है ना, एक तो ये possibility है कि मैं इसको add कर, so this is the document object and I could add it जैसा अभी हमने इसके पहले किया है, and then save this, तो हमें यहाँ इस लिस्ट में document object मिल जाएगा। Presently I haven't done that. This is first possibility to access the document object. Now second possibility is what? If you know the ID of document, है ना, so if you know the ID of the document object is like 015. Now just making few changes in the URL. अभी आप accounts में, presently you are into the account tab, and if you make us a little bit changes inside the URL, so that means you just replace the accounts object ID 001 with the object ID 015, and you just press the enter, see what happens. You are now migrated to documents tab. And even though you don't have document tab onto the tab bar, but still you migrated yourself from the accounts to the document. So this is the benefit. This is the benefit of learning. This is the benefit of remembering the object IDs. ठीक है, एक तो ये हो गया. This is for first benefit. A second is more important actually. ये तो एक बेनिफिट आपको मैंने बताया कि अगर आप थोड़ी बहुत ऑब्जेक्ट आईडीज अगर आप याद करके रखें, पर्टिकुलरली उन ऑब्जेक्ट्स की जिसका कि आपको फ्रीक्वेंटली काम पड़ रहा है अपने प्रोजेक्ट, आपको अगर उनकी ऑब्जेक्ट आईडी याद है तो बहुत अच्छी बात है। यू कुड नेविगेट योरसेल्फ, वेरी इजीली यू कुड नेविगेट फ्रॉम वन tab to another tab, from one page to another page, from one object to another object. So what is the first benefit is that you could make yourself navigate, you could make yourself to be switched from one object to the second object very easy. That is the first benefit. The second is more important. अब ये तो चलो ठीक है, नहीं है ना, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, आई कुड कंसिडर दिस, ये ठीक है यार, मतलब इतना क्या इम्पोर्टेंट, आई कुड इवन ब्रिंग दिस लाइक दिस आल्सो, मुझे काम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का, मैं इतनी आईडीज क्यों याद करूं, व्हाई शुड आई डू दैट, मैं आई जस्ट ब्रिंग दिस, जैसे अभी अभी मुझे काम है डॉक्यूमेंट्स का लगा, लेट ऐड द डॉक्यूमेंट इनटू द टैब बार, दैट्स इट, डन, हो गया खत्म, अब डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, यू विल कम इनटू द टैब, दैट्स इट। तो ठीक है, चलो, इफ यू डोंट फाइंड दिस एज अ पर्पसफुल रीजन टू रिमेम्बर द डॉक्यूमेंट्स आईडी, इफ यू डोंट फाइंड इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ आपके इस ओपिनियन से, ये सर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये, हम मतलब why should we I unnecessarily remember the document the object IDs just to navigate? Oh, I could do that any at any point of time. I could, I could bring the tabs on the tab bar. Even I don't want, I could remove the example. I don't want dashboard, so I do the same thing. Let's go to plus and then customize the tab bar. I don't want dashboard. Just click on the dashboard, remove it, and save it. That's it. So it's a matter of 5 to 10 seconds of the work, that I could bring something on the tab or I could remove something from the tab. तो उसके लिए इतने efforts क्यों लूं? No. Okay, in that case, I'm very agree with you.
Now I'm proposing the second reason why you should know about the documents object. Now, why should you know about the object ID? Okay, let's once again go to the developer console part. So click over here and just go to the developer console. Now let me try to fire one of the query and bring some of the records. Okay, so with the query editor, I'm actually going to do that. So let me open and select the objects. Let me first of all select the account. So let me first select the account and so I'm selecting the ID, name, type, and then phone and the fax and then rating and the active status. Let me fire it. Execute this query. I have all this records. Okay. Now let me bring few more records like contact. Let me go to the contact object. So I'm hiding this first name, last name, and phone and the fax and then email to fire a query. Let me execute this query. So I have few records from the account. Let me repeat this process for any other object like lead, okay, ID, first name and the last name, then city, country, let me fire a query and execute. I have few records from the lead operators. Let me show you something. Let's go to the case. Let me select the ID, case number, type, status, reason, origin, subject, and priority from. Okay. So what I have shown you is just like how to fetch the data from the object with the help of sockets, SOQL, Salesforce object. You are going to learn this, but later in the dev. Abhi kaisa hai? You could now see that there's a column called ID. ID is everywhere. You go to any object and you see the records. ID is everywhere. What is an ID? What is the name created by last modified? Well, we are going to discuss that also. Don't worry. But right now, just put your observation. Whatever I'm telling. I'm copying any random ID. I'm copying any random ID, and I'm just I'm just placing it over here. I have copied any of the random ID, and I'm just placing it over. Any random ID, I'm just copying it, and I'm placing it over here. Which you contact any random ID, I'm just copying it and I'm placing it over here, and just copy and paste it. Read also. Just copying and paste it over here. The cases object, and do the same process over here also. So what I have done, I have copied the object record IDs of few of the records, like if there's a record called as Merck Incorporation. What is the ID for Merck Incorporation? This is the ID. What's the ID for Genie Point? This is the ID. This is record ID. Record IDs are unique for every record. Okay. No two records have the same ID. This is something which is unique. ID is actually a primary key. I don't know whether you guys know this or not. I mean, probably you have I don't know whether you guys have learned the DBMS, the database management system or not, but inside the database, whenever something is stored, there's a unique number for everything. Again, we concept roll number wala. Okay, for every student, there is a unique number associated with it. वो unique number क्या है? That is something called as primary key. So for every record, जो भी record है किसी भी object का, for example, Merck Incorporation is Genie Point. These are the records of account. If I go to the contact, Rose Gonzalez and the Scene Fox and the Jack Rogers,
Pat, Stimulus, and all these are the records. For these these are the IDs. These IDs actually is a unique ID, something called as the primary key. If I go to the lead, I could see that there are Phillips Cotton and then Jeff Glimpse and the Mike Brown. These all are the records. But then these records have a unique number associated to them. That number is called as ID, and that is something called as primary key. So for every record inside the database, there's one number that is associated with, and this number is unique, something called as primary key. Here in the Salesforce, we call this as to be the ID. So ID is actually associated with every record. Now, if I fetch it from database, I could see, मैंने database से क्यों लाया? I could get the same thing from the user interface also. वो भी मैं आपको दिखाने. I'm going to show you the same thing also. I'm going to show you the same thing also. Now see, I could get the IDs from developer console. If I go to the accounts, and the way I actually get it, I open the object and I selected all those columns like name, type, reason, phone, fax, whatever rating. And then I fire a query, and these are the results of the query. Here, from here, I could see the IDs मेरे को यहाँ पे दिख रही है. Same process I repeated with the contact IDs के लिए. तो क्या मैं IDs के लिए इतना लंबा navigation हमेशा follow करूँगा? Actually, it is not needed. But why I bring it up to you? यहाँ तक क्यों लेके आया मैं? Now see the same thing. Let's go to the account. Let's open any of the record. United Oil and Gas Corporation. You see this last. See, this is also ID. ये भी record ID. But what is the difference? What is the difference? What is the difference? Okay. This is also one of the ID. You go to, let's open any of the record. Merck Incorporation. For the Merck Incorporation, this is the ID. Let me just copy this and paste it over. And paste it over. Okay. Let me go with contacts. Okay. Let's try to open any of the contacts. For example, Tim Bar. This is the record ID of this particular contact. This is the record ID. Let me just copy and paste it over. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड आईडीज को देखने का या रिकॉर्ड आईडीज लाने के दो तरीके हैं. The same idea of every record, and you go to opportunity, open any record, whatever the record you open, whatever the record you are going to open. If I open this particular opportunity record, so for this record, what is the ID? This is the ID. The ID is going to list it out in the URL itself. यहाँ भी दिखता है आप, यहाँ भी दिखता है आप. Or else you could find it inside the developer console, the way I actually have done this. And this is a part of development, but in the admin also, I wanted every one of you to get a few of the idea, how to fire the queries and get the result from the developer console also. ताकि थोड़ा बहुत knowledge आपको इस चीज का रहे, एक basic knowledge. क्यों बता रहा हूँ? Reason बताता हूँ. See, I could get this IDs from the user interface also. यहाँ से भी मिलता है मेरे को. See, this is the ID of this particular Burlington Textile Weaving Plant Generation Opportunity record. So I could get the IDs from here also. ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं मिलता. But what is the problem with these IDs? That IDs, see, every record. Now understand this. Now listen it very carefully. Probably it's better to write it down. It's really better to write it down. I don't know whether it has been written in the notes or not. So it's really better to write it down. Every record have a 18-digit alphanumerical ID. Every record inside the Salesforce of every object. If the record belongs to account, the record belongs to contact, campaign, cases, solution, opportunity, lead, every price book, code, whatever. So every record of the Salesforce of every object have an 18-digit alphanumeric number, and that number is fixed. That number is unique. So that number is called as ID. So what are the IDs? IDs are actually 18-digit alphanumeric number. 18-digit alphanumeric number that represents a record. That represents a record. Okay. Now I'm going to relate this object ID, record ID. आप confused हो रहा होगा. Don't worry, I'm going to relate it. सब कुछ अभी एकदम clear हो जाएगा. पूरा दूध का दूध, पानी का पानी. Don't worry. But simultaneously, I'm actually, making you to understand two different concepts. एक ही साथ आपको दो चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं. So every record inside the Salesforce have an 18-digit record ID. Now see, first of all, if you observe this, this is ये जितने भी, ये
यहाँ से यहाँ तक मैंने जितनी भी आईडीज उठाई हैं, आई एक्चुअली हैव गेट इट फ्रॉम द डेवलपर कंसोल, और ये जो मैंने रिकॉर्ड्स आईडी उठाई है, दिस आई गेट इट फ्रॉम यूजर इंटरफेस। ये फर्क है दोनों, ठीक है। तो मैंने दो जगह से रिकॉर्ड आईडीज उठाई है, एक तो मैंने उठाया उसको डेवलपर कंसोल से, दूसरा मैंने उसको उठाया है यूजर इंटरफेस से, आपके एडमिन के मॉड्यूल से। अब इसमें क्या डिफरेंसेस है ना, चलो ठीक है, अब क्लियर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनसाइड एवरी रिकॉर्ड आईडी, कोई भी रिकॉर्ड आईडी आप देखें, कोई भी रिकॉर्ड आईडी आप देखें, द फर्स्ट थ्री डिजिट थोड़ा सा अलग करो, द फर्स्ट थ्री डिजिट्स रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट आईडी, द फर्स्ट थ्री डिजिट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट आईडी। Everywhere the same concept, the first three digit represents object ID। चाहे आप रिकॉर्ड आईडी उठाइए डेवलपर कंसोल से, चाहे आप रिकॉर्ड आईडी उठाइए यूजर इंटरफेस, दोनों सूत्रों, the first three digits of every record, first three digits of every record represents the object ID. So here you could see inside this, inside this particular ID, it's like 001. Now if we know this, that 001 belongs to account, we could probably understand that this is an account record. 001, this is an account record. 001, this is also an account record. 001, it's an account record. 003, it's a contact record. 003, it's a contact record. 00Q, okay, 00Q, it's a lead record. 002, 500 is the case record, like this. So whenever actually what happens, जब हम debug करते हैं ना, जब हम object जब हम coding करते हैं precisely and we got some errors and we simultaneously if we are working on few more objects, एक साथ काफी सारे objects से काम कर रहे हैं, कौन सी object का record fail हुआ है, ये कैसे पता चलता है? you for this you actually go to the debug। आपको सीखने वाले हो, you are going to learn everything, you are going to learn everything, आप सीखने वाले हो आगे चलते ये चीजें। Here there is a logs, there is log, something called as logs। अभी कैसे कि I have not executed any of the class, मेरा method execute नहीं हुआ, so the log is not generated। But when this log is generated, यहाँ जब log generate होता है, यहाँ पे problems list out होती हैं, log generate, तो inside the log we got these IDs, हमको ना IDs मिलती है, because of this record, because of this record you are facing the problem। Now if I know this, how to segregate these IDs, मुझे ये पता है कि पहले 3 digit belongs to the object, first 3 digit belongs to the object, तो कौन सा object का कौन सा record, for example if simultaneously मैंने query fire किया and because of that probably I am getting the results from few more objects, एक से ज्यादा object से data आ रहा है मेरा या data जा रहा है मेरा, accounts, contact, lead, involvement, अब कोई एक record fail, but वो कौन सी object का है वो मुझे पता करना है। For that I am going to see the debug, और debug में फिर जो IDs हैं I'll capture those IDs, और वो IDs को जिस तरह से यहाँ पर अभी मैंने ला के पेस्ट किया है, तो मैं ऐसे ही फिर उस वक्त भी करूँ, एंड उसके बाद ये 3 डिजिट फर्स्ट 3 1 2 3 को फिर अलग कर दूं। फॉर दैट फिर आई कुड सी दैट अच्छा 001 फेल हुआ, दैट मींस अकाउंट रिकॉर्ड फेल, 003 फेल हुआ, दैट मींस कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, 00Q मतलब लीड, 500 मतलब केस का कोई तो एक रिकॉर्ड फेल। सो दिस इज व्हाट वी गेट व्हेनेवर वी परफॉर्म द डीबगिंग, है ना, तब हमको वी डोंट गेट दिस होल रिकॉर्ड, रादर वी गेट द आईडीज। तो आईडी को देख के ना आपको ये समझ में आना चाहिए कि दिस रिकॉर्ड बिलोंग्स टू व्हिच ऑब्जेक्ट, ये जो रिकॉर्ड आईडी आया है ये कौन से ऑब्जेक्ट का है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट आईडीज पता। दिस वाज द सेकंड रीजन, which is actually a more concrete reason why you should learn few of the object IDs। ठीक है, तो अगर आपको पहला रीजन उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं लगता है, so this is the second reason, और ये तो है ही, because when you move on to the development part, आप logs generate होंगे तो you could see what is a log file means, and then what is the importance of having knowing this object IDs। अब ये एक बात, तो ऑब्जेक्ट आईडी ये पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है, बट एक और पॉइंट अपना भी डिस्कशन में बचा है, वो ये कि आई कुड गेट द रिकॉर्ड आईडीज फ्रॉम द 2 डिफरेंट प्लेसेस, दीज ऑल आईडीज आई गेट इट फ्रॉम द डेवलपर कंसोल। ये जितनी भी आईडीज मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है, दिस ऑल आर एक्चुअली आई हैव गेट इट फ्रॉम द डेवलपर कंसोल। Here I have used the user interface, here to get these IDs I have used the user interfaces। Now what is the difference between these two? See, I'll tell you that what is the difference between these two, let me show you something। First 3 digit, last 3 digit, and I'm just segregating this last 3 digit, I'm making this last 3 digit एक space के साथ आपको दिखा। Now see,
whenever you get the IDs from developer console, you get the complete 18-digit IDs, complete 18-digit IDs. First three, उसके बाद में ये पूरा, उसके बाद में ये आखिरी. This is something called as checksum. ये जो values होती है ना, these values are called as checksums. These are called as object IDs. और बाकी का आपका record ID. ठीक है, बट रिकॉर्ड आईडी पूरा ये कंसीडर किया जाता है. एक्चुअली अगर मैं इसको बाइफर्केशन करना चाहूँ ना, so पहला तीन I called it to be the object ID, the last three is checksum, and in the middle part is actually the record ID. बट ऐसा नहीं बोलते जनरली, नहीं बोलते. अगर आपको, हाँ आप प्रोमिनेंट है, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो आप बोलो ऐसे, बिकॉज रिकॉर्ड आईडी मतलब पूरा 18 डिजिट, राइट. तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं ये सेग्रीगेशंस नहीं बताता हूँ. जनरली आई डोंट यूज टू टेल दिस, बट एक्चुअली दिस इज द सेग्रीगेशन, है ना. इस तरह से इसको बाइफरकेट किया जाता है. So when you get the IDs, record IDs, when you get the record IDs from developer console, you get complete 18-digit alphanumeric ID. पूरा ID मिलता है. But when you try to get it from the user interface, see what happens. When you try to get it from the user interface, जब आप user interface से लाते हो ना, you only get the 15-digit ID. आपको सिर्फ 15-digit का ID. You only get this 15-digit alphanumeric ID. That's it. यहाँ पे 15 digit मिलता है. You won't get the entire 18-digit ID. आपको पूरा आईडी नहीं मिलता है. Just because of the security reasons, this checksum part has been hidden. The checksum part has been hidden. ठीक है, अभी आप मेरे को बताओ, वैसे तो हम इसको यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिजिट पर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते. लेकिन whenever we perform the integration, है ना, जब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, we integrate Salesforce with some other website, and then if at all I wanted to transfer this record, किसी वजह से मेरे को ये अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांसफर करना है. अब यहाँ देखो, अब ये जो है ना ACU, यहाँ पर भी ये just मतलब I'm talking about this record, AC, this one, my Merck Incorporation का record. If I wanted to transfer this record to some other third party system, मतलब किसी, मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहा हूँ जहाँ ये this is my Salesforce site, this is my Salesforce site, and then I have a third party integration, है, एक third party का website है, and we are transferring few of the parameters to this. On return, he is returning some of the parameters, something called as integration. I wanted to transfer this account record, तो मेरे को ये अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांसफर करना है Merck Incorporation का. अगर मैं ये रिकॉर्ड ट्रांसफर करूंगा 15 डिजिट वाला, तो इट विल नॉट गोइंग टू गिव हैपन. दिस इज गोइंग टू गिव. व्हाई? बिकॉज दिस इज फॉर द इंटरनल पर्पस. सेल्सफोर्स के अंदर में आप कहीं भी यूज कर लो इसको, सेल्सफोर्स के अंदर में 15 डिजिट का रिकॉर्ड कहीं भी यूज कर लो. लेकिन whenever you actually wanted this record ID to be get transferred, तो आपको पूरा ID लगेगा. पूरा ID मतलब along with the checksum. There you require to get it from the developer. तो अगर आपको Salesforce के इंटरनल ऑपरेशन है, विद इन द बाउंड्री, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं भी रिकॉर्ड यूज करना है, so just knowing the 15 digit is good. That's it. If you know the 15 digit ID, it's really going to work you out. It's really going to work. But whenever if I at all wanted to transfer the record to a third party system, Salesforce के बाहर, now out of the organization की हम बात कर रहे हैं, then you should require this whole 18 digit character. तो अभी कभी क्वेश्चन पे है ना, इंटरव्यू में अगर कभी ये पूछा गया, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट आईडी, रिकॉर्ड आईडी पे डिस्कशन चल रहा है, और ये बात निकली कि देखिए मतलब आप बोल सकते हो कि रिकॉर्ड आईडी एक्चुअली 18 डिजिट की होती है, बट व्हेनेवर वी ट्राई टू गेट इट फ्रॉम द यूजर इंटरफेस, अगर मैं यूजर इंटरफेस इसको लेने की कोशिश करता हूँ, so actually on the user interface we only get this 15 digit ID of every record. फिर आपसे पूछा जाएगा कि ओके, व्हाट इज द वे टू गेट दिस 18 डिजिट आईडी. तो आपने बोलना कि वी कुड गो टू द डेवलपर कंसोल, वी कुड गो टू द डेवलपर कंसोल एंड देन वी कुड फायर अ क्वेरी, with the query editor. This is the query editor tab, this is the query editor tab. So we could fire a query, and by this query editor actually, we could get the records, and if I get the records, even I get the IDs, the complete 18 digit ID. अब यहाँ पर भी डिस्कशन खत्म नहीं होगा. They will ask you one more thing. Okay, what is the reason why I should get it? I mean, why we required to get a whole 18 digit ID? What is the reason? तो अब आपको ये एक्सप्लेन करना है कि if at all inside the Salesforce, if at all inside the Salesforce you wanted to access any record, आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है. Now let me show you that also. मैं डायरेक्टली बताता हूँ. Let me just copy this ID ना, एक बार इसको. Let me just copy this ID. ये ID को मैं अपने पास, ये 15 digit ID है ना, I'm just copying this ID and
For example, we are over here. मैं opportunity पे हूँ, ठीक है? I'm onto the opportunity object. I am replacing this ID with the ID what I have copied, 15 digit का ID. ठीक है? ये जो मैंने कॉपी किया उसको मैंने पेस्ट किया and let me press the center. कोई प्रॉब्लम नहीं, काम कर रहा है. Of course it's working because I am, अब कहाँ पर आ गया मैं अकाउंट के मार्क इनकॉर्पोरेशन रिकॉर्ड. पहले मैं कहीं और हुआ करता था. Now just pasting the ID, I actually become over here. ठीक है? ये चीज. अब सेम थिंग लेट मी शो यू विद दिस. अगर यहाँ पे अगर मैं इफ आई प्रॉब्लम है, अब मैं अगर इसी का 18 डिजिट का आईडी डालता हूँ तो ये काम करेगा क्या? चलो वो भी देख लेते हैं. दिस इज द 18 डिजिट आईडी. लेट मी शो यू दैट आल्सो. ये स्पेसेस हटा दो. ठीक है? अगर मैं ये 18 डिजिट आईडी इफ आई ट्राई टू कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे 18 डिजिट डालता हूँ तब क्या होता है? लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस. इसको देखो, मैं प्रेस कर रहा हूँ विद दिस 18 डिजिट एंड लेट मी नाउ प्रेस द एंटर. सेम थिंग, यू आर नाउ इनटू द मार्किंग. तो यूजर इंटरफेस लेवल पे ना एज सच कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा. इधर टू एक्सेस द रिकॉर्ड, अगर आपको ये मर्क इनकॉर्पोरेशन का रिकॉर्ड एक्सेस करना है, at all you wanted to access the Merck incorporation record, there are two possibilities. You could paste the whole 18 digit ID. आप पूरा ID पेस्ट कर सकते हो. सेकंड, अगर ऐसा नहीं करना है तो just remove the last three character and still you are onto the same thing. तो फिर क्यों मैं पढ़ूं? Why at all I focus on this? मैं क्यों पढ़ाई करूं इसकी? मैं क्यों 18 डिजिट की बात करूं? उसका रीजन क्या है? There's only one good reason for that, and that is the essential reason. देखो, बात पूरी करने दो मुझको. आप अगर एक टॉपिक निकला है तो उसको पूरी तरह से समझाने दो मुझको. आप भले ऑब्जेक्ट आईडी मुझे बताना है, मैं इतना दूर क्यों लेके जा रहा हूँ? बिकॉज ये मेरा वे है पढ़ाने का. ठीक है? मैं कभी शॉर्टकट नहीं पढ़ाता. तो सेल्सफोर्स है और एक एक्सटर्नल सिस्टम है जिसको हम थर्ड पार्टी सिस्टम बोलते हैं. और कुछ तो भी इंटीग्रेशन चल रहा है. इंटीग्रेशन मतलब वी आर एक्चुअली इंटीग्रेटिंग फ्यू, वी आर ट्रांसफरिंग फ्यू पैरामीटर्स टू दिस, एंड इन रिटर्न टू दिस इज एक्चुअली गिविंग मी सम ऑफ द पैरामीटर्स. वी आर एक्सचेंजिंग फ्यू इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेल्सफोर्स एंड द थर्ड पार्टी सिस्टम. This third party could be in the Java system, SAP system. Salesforce सबके साथ integrate होता है. That is what the flexibility of Salesforce. Now here there is a requirement to transfer one of the account record transfer करने की जरूरत है. जब आप अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांसफर कर रहे हैं, रिकॉर्ड मतलब आईडी ट्रांसफर करना, तो अगर आप ये 15 डिजिट आईडी ट्रांसफर करेंगे ना तो आपको एरर मिलेगा. बिकॉज दैट 15 डिजिट आईडी कैन वर्क विद इन दिस पॉइंट. सेल्सफोर्स के अंदर कहीं भी आप काम कर लो, आप चाहे 15 डिजिट पे काम करो रिकॉर्ड के या 18 डिजिट पे काम करो, सेल्सफोर्स नो इट. दोनों सूरतों में आपको एरर नहीं देगा. लेकिन व्हेन एट ऑल यू ट्रांसफर, व्हेन एट ऑल इट इज रिक्वायर्ड यू टू ट्रांसफर अ रिकॉर्ड टू थर्ड पार्टी, कंपलसरी आपको 18 डिजिट ही ट्रांसफर करना. उस वक्त, उस समय, इस जरूरत को पूरा करने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड नो हाउ टू गेट द कंप्लीट 18 डिजिट आईडी, हाउ टू गेट द कंप्लीट 18 डिजिट आईडी ऑफ एनी रिकॉर्ड. और मैं आपको एक बात बताऊं, आई आस्क्ड दिस इन द इंटरव्यू. जब मैं इंटरव्यू लेता हूं एडमिन्स के, है ना, L1 इंटरव्यूज लेता हूं. एक्चुअली L2 पे अभी मैं नहीं जाता हूं बिकॉज L2 इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर इवन मी. L1 ही इंटरव्यू, L2 कम चलता है. L1 इंटरव्यू इट्स ऑलमोस्ट अगर अच्छा कैंडिडेट है ना, समटाइम इट ऑलमोस्ट गोज टू 2 hours एक कैंडिडेट. L2 कम चलता है और L1 से सबसे ज्यादा फिल्टरेशन जो होता है वो यूजुअली L1 से होता है. कुछ कंपनियों में ऐसा भी होता है कि एक ही इंटरव्यू देते हैं बिकॉज दे आर हैविंग सो रिक्वायरमेंट. आई मीन दे आर हैविंग सो मच ऑफ द, जनरली एक ही इंटरव्यू है, एक टेक्निकल, एक एचआर और एक डिस्कशन. इस तरह से बस जनरली दे, या फिर एक एग्जाम ले लेते हैं कभी कभी. आजकल ये एक नया ट्रेंड आया हुआ है कि दे एक्चुअली टेक वन ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम. उसमें आपका 60-70% स्कोर भी रहा, देन दे शेड्यूल योर टेक्निकल इंटरव्यू, जिसको राउंड 2 देते हैं. तो कभी कभी ऐसा भी होता है. So in my organization, I used to sit in the L1 interviews लेता हूँ. L1 फिर कैसा level 1. When I mean the people those who have applied for the admin, when I initiate discussion to them, object क्या है, IDs क्या होता है, object ID, record ID क्या होता है, what is the length of record ID. Some people used to say me, okay sir, it's like 18 digit, but if on the user interface you only see the 15 digit part. So I asked them, okay, then if I wanted to get the whole 18 digit ID, what is I mean how to get this. और काफी सारे लोग तो मेरे को कहते हैं कि इट्स ओनली अ 15 डिजिट आईडी. मतलब जिसने कभी भी, he never has migrated on the developer console, वो नहीं बता सकता इस चीज को. सीरियसली नहीं बता सकता. सो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर देखो, काफी अलग अलग जगह से ट्रेन होते हैं बंदे लोग, है ना. जो एडमिन पढ़ के आ रहा है ना, उसको जिस जिस व्यक्ति ने ट्रेन किया, जैसे आप मेरे पास ट्रेन हो,
या आप में से कौन कौन एडमिन पे रहेगा और कौन डेवलपमेंट पे जाएगा मुझे नहीं पता, आज मैं बता नहीं सकता। मेरी सजेशन मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा चलो डेवलपमेंट में सब के सब चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ के मिलेंगी, पैकेज बढ़ के मिलेंगे। तुम बोलोगे सर मैंने कोडिंग नहीं किया, तो मैं कहूंगा ठीक है ना, मैं वो सिखा दूंगा, उसकी चिंता क्यों करते हो। तो अब जैसे काफी सारे बंदे आते हैं एडमिन ट्रेनिंग करके आते हैं, व्हेन आई आस्क देम कि पहले तो मुझसे कहते हैं कि मैं रिकॉर्ड आईडी पूछता हूं तो डेड यूज्ड टू टेल मी सर 15 डिजिट हो, फॉर एवरी रिकॉर्ड फॉर एवरी ऑब्जेक्ट द आईडी इज 15 डिजिट। तो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ 15 डिजिट और 18 डिजिट, नो सर इट्स 15 डिजिट, एवरीवेयर इट्स 15 डिजिट। तो मैं समझ जाता हूँ कि फिर इसका मतलब ये है कि उसने सिर्फ इतनी एरिया पे काम किया, इसके आगे का उसको पता नहीं। मतलब जिस किसी ने इसको भी ट्रेन किया, जहां से भी इसने पढ़ाई किया है, उन्होंने उसको ये नहीं बताया कि एक्चुअली रिकॉर्ड आईडी जो होता है ना वो 18 डिजिट का होता है। यहाँ पे आपको 15 डिजिट दिखता है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको वो 18 डिजिट चाहिए तो यू नीड टू गो विद दिस नेविगेशन जो अभी आपको सिखाया मैंने। जब सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट है ना, आप फाइल पे जाओ, ओपन पे जाओ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल यू सिलेक्ट दिस अकाउंट ऑब्जेक्ट, यू सिलेक्ट द अकाउंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अकाउंट ऑब्जेक्ट का ये पूरी फील्ड डिस्प्ले होती है। उसके बाद में आप क्वेरी एडिटर नाम की अपनी फील्ड होती है, यहीं पर बटन होता है क्वेरी, जस्ट सिलेक्ट द आईडीज एंड द नेम, फायर अ क्वेरी। करना क्या आपको, बटन ही तो प्रेस करना है, फायर अ क्वेरी एंड यू सी दिस इज द क्वेरी। ये क्वेरी बन गई है, दूसरा बटन, पहला बटन ये है, दूसरा बटन एग्जीक्यूट कर लो, एग्जीक्यूट कर लिया, ये नेम आ जाएगा, ये आईडीज आ जाएगा। हियर यू कुड गेट द होल 18 डिजिट आईडी। ये तरीका है 18 डिजिट निकालने का, और ये जनरली नहीं पता होता है, बताते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बता। 15 दिन में लोग एडमिन खत्म करते हैं, आई डोंट नो हाउ, हाउ इट इज एट ऑल पॉसिबल। 40 से 45 सेशन लगते हैं मुझे पूरा समझा के देने, लोग 15 दिन में एडमिन खत्म। बट कैसा होता है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात। इफ यू डोंट नो, इफ यू नो समथिंग समथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग एनीथिंग। ऐसा रहता है ये कंसेप्ट, इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। तो अब एक तो आप ये जान लो कि रिकॉर्ड आईडीज, ऑब्जेक्ट आईडीज क्या है, ऑब्जेक्ट आईडीज फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। देखो ये डिस्कशन इतना लंबा क्यों जा रहा है, बिकॉज दिस इज रियली एसेंशियल डिस्कशन, वरना मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ा के आई कुड इजीली माइग्रेट टू द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत सिंपल है, स्किप करना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट दैट इज नॉट द पर्पस व्हाई यू आर हियर, दिस इज नॉट द पर्पस। यू आर हियर बिकॉज आई एम, and at the end of this training, I could probably put up to 3 years of experience on your resume. Those who are having this gap, I mean, those who are having a graduation degree, post graduation 2017, 18 के around है जिसका degree, guys get ready. I'm going to put at least 2 to 3 years of experience on. वो कैसे manage करना वो हम बात करेंगे. But then I'm going to put that much of experience on your resume कि you are actually having 3 years of Salesforce experience, 2 years, 2.5 years, 2.8 years. When I'm putting this much of experience, this is the way I'm actually getting you guys as trained into this. Your training is going in this way, your training is going in that way that you could now put, on your resume, you could put up to 2.5, 3 years, a very happy experience. Because this much of the knowledge is actually with those guys only who have worked inside the industry for 2.5 years or 3 years. वरना एडमिन तो 15 दिन में लोग पढ़ के आ रहे हैं, 15 दिन, 15 lectures, 1 hour, 2 hour, whatever. I don't know how, but they are managing this all within the 15 lectures. फिर क्या होता है उसको, उसके बाद में वो फेल होते हैं, आगे फिर कुछ नहीं आता। तो believe on your training, the conceptually the way we are going, in depth of every concept. This only you are going to get this all when you are having an experience of 3 to 5 years. तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है आप लोगों के साथ, whatever the experience I am having right now, I'm building you, I'm shaping you with that experience. ये जितने कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, this whole is my experience. This is not the content of the training what I was getting at that time जब मैं first time trained हुआ था. इसका 25% मेरे को मिला था, on rest 75% now I have added this with my own experience. और जैसे जैसे मेरा knowledge बढ़ता जाएगा, I'm going to increase the knowledge of my trainees also. This is the reason why I am very confident about that. You should also be very confident on your training. Okay, so whenever now they ask you what is an object ID, let's come back and let's summarize the point. Every object, what is the answer? Very confidently. Very confidently. What is the answer? Every object inside the Salesforce have a 3-digit number, a 3-digit alphanumeric number. Sometimes it's only number. Sometimes it's a combination of numbers as well as the alphabets. Okay. So every object inside a Salesforce,
is having a 3-digit number, 3-digit alphanumeric number, and this alphanumeric number is called as object ID. For every record, this was related to object. Now let's come to the record. For every record inside any of the object, record of account, record of contact, record of lead, record of campaign, for every record, there's also an ID, but that ID is of 18 digit. That ID is of 18 digits. So every record inside the Salesforce is also having an ID, and that ID is what? That ID is of 18 digit. Now, out of that 18 digit, if I see the complete 18 digit ID, the first three digits are object ID, and rest of the 15 digit actually represents the complete ID. उसमें से भी आखिरी का checksum होता है. अब इसमें भी दो चीजें कि if you try to get the record ID from user interface, यहाँ से you could only see the 15 digit ID. पहले 15 digit, आखिरी का 3 कैरेक्टर यानी checksum यहाँ डिस्प्ले नहीं हो. बट हाँ, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता. इनसाइड द सेल्सफोर्स एवरीवेयर मैं कहीं पर भी काम करूं विद इन द सेल्सफोर्स, knowing the 15 digit ID of every record is much sufficient for me. Why should I remember? Why should at all I know? Why should I get this 18 digit? वो किस लिए? जब आप Salesforce से बाहर निकल के काम, whenever you integrate Salesforce with any other system, and whenever at all we transfer to exchange few of the parameters, किसी वजह से मुझे लीड का रिकॉर्ड देना है और उनसे कुछ उसके बदले में लेना है, तो अगर मुझे लीड का रिकॉर्ड देना है मतलब उस रिकॉर्ड की आईडी भेजना है मुझे, तो वो आईडी अगर मैं 15 डिजिट भेजूंगा तो काम नहीं करेगा. क्यों? बिकॉज दैट 15 डिजिट वर्क्स इनसाइड द बाउंड्री, that 15 digit works inside my organization. It's not going to work out of the organization. So if at all integration की बात चल रही है ना जब भी, तो you need to send the whole ID, 18 digit ID. वो कब पॉसिबल है? जब आपको ये पता हो कि मैं कहाँ से निकालूं 18 digit का ID. तो एडमिन का जब मैं इंटरव्यूज लेता हूँ ना, तो आई पर्सनली हैव ऑब्जर्व दिस. नहीं पता, बस यहाँ तक कोई लेके ही नहीं आता, तो इसलिए मैं देखो बार बार आपको डेवलपर कंसोल पे लेके आता हूँ. आप अभी आप एडमिन का ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन कैसा है, एक टॉपिक अगर कोई निकलता है तो उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए. तो मैं ऑब्जेक्ट आईडी पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे. आई कुड जस्ट सी अरे देखो यहाँ 3 डिजिट का नंबर, 2-4 टैब पे लेके जाता, हाईलाइट कर देता, डिस्कशन खत्म हो जाता. लेकिन फिर आप में और उनमें और मुझ में और उन लोगों में फिर कोई फर्क नहीं पड़ता था. इसलिए डिस्कशन को एक्सटेंड किया गया और आपको पूरी जानकारी दी गई कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या फायदे हैं. और दूसरा इससे एसोसिएटेड जो एक रिकॉर्ड आईडी का जो हमारा कंसेप्ट था वो भी हमने कवर किया. उसमें भी दोनों बातें की, नोइंग 15 डिजिट कहाँ पे काम करेगा, एंड नोइंग 18 डिजिट वो कहाँ पे लग सकता है आप. ठीक है. सो दिस वाज होल टॉपिक, दिस वाज द कंप्लीट. अब इसमें अपने कुछ फायदे नुकसान जो भी है, इसके नुकसान तो नहीं है एक्चुअली, एडवांटेज ऑफ नोइंग दी आईडीज, तो ये सब वही चीजें और जो आप बताया. So let's stop it by today, and by tomorrow we are going to start. Yes, tomorrow is going to be an essential important lecture, because by tomorrow you will know how to build up an application. देखो आप खुद सोचो, if you go for the Java, if you go for the .NET, some with other good programming languages, आप एक application कब build करो? When you at least get 70 to 80% knowledge of that. और अभी तो आपने सेल्स को शुरू किए हुए, पिछले 5 दिन जो थे वो तो डेमो था. उसके बाद मैंने आपको डेवलपर और बताना सिखाया, एंड जस्ट वी एक्चुअली हैव स्टार्टेड विद ओनली फ्यू कांसेप्ट्स. मतलब टेक्निकली देखा जाए टुडे इज द वेडनेसडे, राइट? ओके, सो दिस इज द थर्ड क्लास. एक्चुअली दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ योर ट्रेनिंग, सेल्सफोर्स ट्रेनिंग. उसके पहले तो आई वाज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लाउड, व्हाट इज अ सेल्सफोर्स, and what is how it's differ, what is the means, what it means by the different forms of the cloud, what is on premise, what is on cloud, what is SaaS, PaaS. This was actually we were discussing just the fundamental concepts of every cloud computing and the fundamental concepts of the Salesforce. अगर मैं actual training की बात करूं कि the way I have started with the concept of Salesforce, तो आज तीसरा दिन है और कल रहेगा आपका चौथा दिन. So within that 3 days, just having a knowledge of 3 days of the training, Salesforce is the only technology where you could build up the own CRM, customized CRM applications. So by tomorrow we are going to start with our project. मैं initially 2 application as an sample I'll tell you to create 2 applications
उसमें से एक एप्लीकेशन हम लेंगे और उस एप्लीकेशन को हम एज एन प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट, और उसके रिलेटेड हम पूरा, फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करूंगा कुछ इससे रिलेटेड, and then we are going to start with this project. So tomorrow is going to be a very special day because you are going to be get introduced with your project. आप कल से आपने प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करने वाले, you are going to start with your application, जो एप्लीकेशन आपको Salesforce में बनाना है, ठीक है? So tomorrow will be an essential day of your training. Let me now stop the recording first.